will witness Havan simultaneously from the 14th of January till the 22nd of January till the Pran Pratishtha of Maryada Purushottam Shri Ram's idol takes place at the Shri Ram Janmabhoomi at Ayodhya. There is a separate ceremony that will happen from the 16th to the 22nd, a 7-day long ceremony where an effort will be made to please the gods so that this entire ceremony is without a fault. Nirvighna. Nirvignam kurume deva sarvakaryeshu sarvada. That's the prayer which is to Lord Ganesh. And with these prayers, every day there will be a different ceremony for a period of 7 days. This is how holy this city is, and Ayodhya Vasis are coming together to ensure when Ram Lala finally enters his home, it's a flawless ceremony. So there will be chants of Jai Shri Ram all across Ayodhya, and here where we are at the Ram Bhadracharya Ashram in Ayodhya, you can look at how Havan Kunds are being prepared for a grand prayer ceremony. Not one, not two, not 100, but 1008 Havan Kunds. And it looks divine when you come here. Of course, it's a foggy evening today, but when you look all around you will see Havan Kunds are being prepared. They're being painted right now, and it's a very religious atmosphere on ground zero. Every street, every lane, something or the other is happening to welcome Ram Lala. It's happening after a very, very, very long time. Ayodhya Vasis say we waited for this day for centuries, 500 years. They waited for Ram Lala to come home, and they will welcome him in grand style. Let me get you details. On the 16th of January, there will be Vishnu Puja, and there will also be Godan on the banks of river Saryu. This is, of course, subject to final approval from the Shri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra, but that is what sages, saints and seers have put their heads together. They've been discussing how Ram Lala should be brought home. They've read through various books, religious scriptures, gone through what the parampara is, what the tradition is, and every bit of the tradition is being followed. In fact, what you will see in Ayodhya, and we will tell you that over the course of the next 1 hour, how tradition and modern world are coming together, a sangam of tradition and modern world. 17th of January, very, very important day in the history of Ayodhya, where the idol of Ram Lala, that final idol that will be selected, whether it's a Krishna Shila idol or a white marble idol from Makrana, that idol will be taken out in a procession. Will it be open to everyone? From what we've been told, unlikely. There'll be massive security when that idol of Ram Lala will be taken out to various temples, old temples, ancient temples and streets of Ayodhya. It's known as Nagar Brahman. The idol will be taken for Nagar Brahman. This will happen on the 17th before being taken to the Ram Temple. Then on the 18th, there will be Ganesh Puja, Varun Dev Puja, and of course also Vastu Puja that will take place. Sages and saints, different sages and saints will all be together. They'll be carrying out puja at different locations. On the 19th of January, Havan fire will be lit. That Anushtan, once the fire is lit, and Agni Dev will bless the entire ceremony. A fire will be lit at various Havan Kunds. Again on the 20th of January, there will be a very important Vastu Puja. In case there's any Vastu, any issues, any niggles, the Vastu Puja is done to ensure that every hurdle is crossed. 21st of January, extremely important. Holy water has been brought from various rivers and kept in urns. Water from the Saryu River, water from all the holy rivers in Nepal, water from other holy rivers from across the length and breadth of our country. So in more than 100 urns, but in 125 urns, holy water is kept,
and Lord Ram's idol will be bathed in that. And then on the 22nd of January will be the Pran Pratishtha. This is how this ceremony will take place from the 16th onwards all the way till the 22nd, when the Pran Pratishtha finally takes place, and Prime Minister Narendra Modi will be a part of it. Acharya Satyendra Das, he gave us some details about how kajal would be applied with a golden stick around the eyes of Lord Ram. He'll finally be wearing beautiful new clothes that are currently being selected, including gold threads, including pitambar that has been selected, and a lot of other colored clothes for Lord Ram. After all, he's a 5-year-old boy, Ram, who will be coming home and will be there at the Garbhagriha, Ram Lala. But what are the preparations that are taking place? It's not just the temple and around the temple. This entire holy city is being decked up. There's a Ram Path, there is a Dharm Path, various roads are coming up, and Ramayana, the life of Maryada Purushottam Sri Ram, through murals, through paintings, through sculptures, you'll see that all across this holy city, right from the time when you reach the Valmiki International Airport. So Prime Minister Narendra Modi has made that announcement. It's the Valmiki International Airport, and that airport, when you come to that international airport, you'll see beautiful paintings and pictures and murals about the Ramayana. So modern airport with India's tradition, our civilizational past and our modern outlook, all of that will be on display. We bring you more in this report. Ayodhya's Ram Temple inauguration preparations are in final stage. The decorations at Rampath, Bhaktipath and Sugriv Fort are in the final stages. The walls are decorated with terracotta and security has been beefed up. We are currently at Ayodhya, at the Lata Mangeshkar Chowk. Massive security deployment all over this place. This area has completely been sealed off. With me are commandos of the Uttar Pradesh Police Anti-Terror Squad that have been deployed here. You have Rapid Action Force that's deployed, but in sensitive locations, whether it's the Hanuman Gadi temple, whether it's the Ram Janmabhoomi temple, the airport, the railway station, other VPs, the vital assets and vital points, you have the anti-terror squad teams that are deployed. The chief priest of Ram Janmabhoomi calls it the happiest moment because Ram Lalla is moving from a tent to his grand temple with a golden throne. पहले जिस प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही है वो नई मूर्ति है, नई मूर्ति बनी है, प्राण प्रतिष्ठा उसकी होनी है। जिनकी दर्शन हो रहा है, पूजन हो रहा है, ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। और ये जब वो मूर्ति स्थापित हो जाएगी वहाँ पर, जिनका प्राण प्रतिष्ठा होना 22 तारीख को, उसके बाद में तब इस मूर्ति को वहाँ स्थापित किया जाएगा। Acharya Satyendra Das also gave India Today a sneak peek of what to expect during the consecration ceremony. प्रधानमंत्री जी उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए हैं मुख्य यजमान। बाकी कार्यक्रम जो होता है वो पहले से होता रहेगा और वो कार्य जो है कई अनुष्ठान करना पड़ेगा, कई काम होते हैं उसमें। विशेषकर नवग्रह की पूजा होती है, देवी देवताओं की पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है, अन्य देवताओं की पूजा होती है। A golden pencil of kajal will be brought to apply kajal around Ram Lala's eyes. Clothes made of golden threads is being prepared for Lord Ram. Painting, cleaning and artwork is visible everywhere in the temple premises ahead of the grand inauguration ceremony on January 22nd. In less than a month, this entire preparation will reach its crescendo with much-awaited grand inauguration of Mandir in Ayodhya. With Gaurav Sawant in Ayodhya, Bureau Report, India Today. It's a very emotional moment for the people of Ayodhya. It's a very emotional moment for the believers. But imagine how emotional this moment would be for the chief priest of the Sri Ram Janmabhoomi temple. He served Lord Ram for the past 30 years plus as a pujari at the Sri Ram Janmabhoomi Mandir.
He's seen Lord Ram, a 5-year-old child, or Ram Lala, even a younger child, in a tent. Tat mein Maryada Purushottam Shri Ram. He's seen when it would be extremely hot, when it would be extremely cold, when it would be raining. For the Hindus, for the believers, it's not an idol, it's a living deity. So imagine a little child in that rain getting drenched, that child in that hot sun, that child in that biting cold, and a rather heartless system, as many say, that did not permit or took its own sweet time in permitting this Divya Bhavya Ram Mandir coming up at Ayodhya. Finally, it's happening, and I caught up with Acharya Satyendra Das. I asked him, what will this ceremony be like? Let's listen in. आचार्य जी, आपका इंडिया टुडे पर बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह की तैयारियां इस समय चल रही हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और वो अनुष्ठान कैसा होगा? देखिए, तैयारियां इस प्रकार से, वो राम उत्सव है, और राम उत्सव की जो तैयारियां हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं, क्योंकि कोई भी कमी न रह जाए, चाहे वो आने वाले जो अतिथिगण हैं और निमंत्रित किए गए जो लोग हैं, वो सब उनकी आवास की और उनकी सुरक्षा की सारी व्यवस्था की गई है। और प्राण प्रतिष्ठा में जो जो आवश्यक है, जो जो काज होना है, जिन जिन देवी देवताओं का पूजन होना है, ये सारे काज सही हो गए हैं, अब शुरू होंगे। और इसी रूप में उनका जितना जिसमें ज़रूरत पड़ती है, जब जो जो वस्तुओं की आवश्यकता है वो सब एकत्रित हो गया है। अब केवल 22 जनवरी की प्रतीक्षा है, और उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी। और उस प्राण प्रतिष्ठा में जो जो विधि विधान होते हैं प्राण प्रतिष्ठा में, वो सब कुछ तैयार है, सब कुछ उसी रूप में किया जाएगा। और ये जो आयोजन और जो पूजन है वो तो 16 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। देवी देवताओं का अनुष्ठान, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास, और वो जो जिस मूर्ति की अब तक भक्तगण उपासना करते आए हैं, वो उस मेकशिफ्ट मंदिर से नए गर्भगृह की ओर कब निकलेगी? पहले जिस प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही है वो नई मूर्ति है, नई मूर्ति बनी है, प्राण प्रतिष्ठा उसकी होनी है। जिनकी दर्शन हो रहा है, पूजन हो रहा है, ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। और ये जब वो मूर्ति स्थापित हो जाएगी वहाँ पर, जिनका प्राण प्रतिष्ठा होना 22 तारीख को, उसके बाद में तब इस मूर्ति को वहाँ स्थापित किया जाएगा, और इस रूप से वहाँ मंदिर में स्थापित किया जाएगा, जिससे इन मूर्तियों का भी दर्शन हो जो पहले से दर्शनीय हैं। उसी प्रकार से जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नई है वो इनसे बड़ी है, 5 वर्ष के बालक के रूप में है, इसलिए उसका भी दर्शन हो। इसी हिसाब से, इसी व्यवस्था से वहाँ रखा जाएगा, जैसे कि आने वाले श्रद्धालु भक्तों को दर्शन इस मूर्ति में हो, और उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का भी दर्शन हो। मुख्य यजमान इसके प्रधानमंत्री होंगे, तो वो जो अनुष्ठान होगा वो किस प्रकार से होगा आचार्य जी? अनुष्ठान वो मुख्यमंत्री केवल उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए हैं, बाकी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए हैं मुख्य यजमान। बाकी कार्यक्रम जो होता है वो पहले से होता रहेगा, और वो कार्य जो है कई अनुष्ठान करना पड़ेगा, कई काम होते हैं उसमें। विशेषकर नवग्रह की पूजा होती है, देवी देवताओं की पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है, अन्य देवताओं की पूजा होती है, इसलिए वो 15 से शुरू हो जाएगा। और विशेष रूप से जो प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति है उसको नगर भ्रमण कराया जाएगा। नगर भ्रमण के बाद में जब वो गर्भगृह में पहुँचेंगे तब उनको प्राण प्रतिष्ठा के रूप में जब हो जाने के बाद उस सिंहासन पर बैठाया जाएगा, और सिंहासन बैठने के बाद में तब उनको स्नान कराया जाएगा, वस्त्र धारण कराया जाएगा, और माला फूल चंदन लगाया जाएगा। उसके बाद में उनको मुकुट और कुंडल पहराए करके और फिर उनकी आरती उतारी जाएगी, भोग लगेगा, और भोग लगने के बाद में उनका पट खोल दिया जाएगा, और जिससे कि जो भी कार्यक्रम है, दर्शन करने की जितने लोगों की आवश्यकता होगी उस रूप में उनका दर्शन कराया जाएगा।
और उत्सुकता तो बहुत ज्यादा है कि रामलला को उनके जहां उनका जन्म हुआ जन्म स्थान पर देखें। आप भाव विह्वल हो जाते हैं इसके बारे में सोचकर। बहुत लंबी प्रतीक्षा आपकी रही है। देखिए, यह नहीं कि और प्रेरक रघुवंश विभूषण परमात्मा का स्वयं यह कृपा होती है और वो आत्मबल देते हैं जिससे भयभीत लोग नहीं होते। उसी प्रकार में पुजारी हूँ। हमें इतनी कठिनाई होने के बाद में कभी भी निराशा नहीं हुई और यह भी नहीं हुआ कि आत्मबल होता अनुभव गम भजन ये संता अनुभव होता है कि ये समस्या जरूर हटेगी और वह भी समस्या आएगी, क्योंकि भगवान की इच्छा बिना कुछ नहीं होता है। तो उनकी इच्छा है, जैसे वनवास जाने की इच्छा रही वैसे ये भी इच्छा है, यह भी पूरा होगा। और ऐसा हुआ ही। समय आने पर अब वो भव्य मंदिर बन गया और वहाँ रामलला विराजमान होंगे। ये बताइए किस तरह के वस्त्र रामलला पहनेंगे, किस तरह से आप वो अनुष्ठान करेंगे, उनका स्नान, उनको किस तरह से तैयार किया जाएगा, किस तरह के आभूषण? वहाँ के सारे काम विलक्षण हैं, अद्भुत हैं। वस्त्र भी अद्भुत है, मुकुट भी अद्भुत है, उनकी पूजा अर्चना भी अद्भुत है। वो अपने आप में विलक्षण है, इसलिए वह जो है वो बहुत ही रहस्यमयी है। क्योंकि नए नए प्राण प्रतिष्ठा की जो व्यवस्था है उसमें यह सामान्य कार्य नहीं है, वो विशेष कार्य है। इसलिए उनके वर्ष के ऐसा भी कुछ लोगों ने इच्छा व्यक्त की है कि हम रामलला के वस्त्र सोने का बनवा करके पहराएंगे। तो यदि वो आ गया तो सोने के वस्त्र पहनेंगे, सोने के मुकुट पहनेंगे, सोने कुंडल पहनेंगे और जो वहाँ के वो दिव्य होगा, स्वर्णमय होगा और भगवान स्वयं दिखाई देंगे कि हाँ किस प्रकार से अद्भुत दृश्य भगवान रामलला के है। जो मुख्य यजमान होंगे प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री जी, तो क्या उनको भी कुछ विशेष पहनने की, कोई पूजा करने की आवश्यकता है मुख्य यजमान बनने की? देखिए, हमारे यहाँ धोती है, पैंट और पैजामा नहीं है। इसलिए यही होगा कि प्रधानमंत्री जी धोती पहन के हमें, बाकी वस्त्र तो वही पहनते हैं, वो ठीक है जो भी पहने, लेकिन धोती पहनना पड़ेगा। और उसके बाद में उनको जो नियम बनाएगा उस नियम के अनुसार उनको उतने समय तक वहाँ उसका पालन करना पड़ेगा। So tremendous excitement and enthusiasm amongst the devotees here in Ayodhya, especially the chief priest who says finally it's happening. He of course says he was very confident. So did of course Anu Sompura, one of those who was supervising the carving of stones since 1990. He says ever since Narendra Modi became the Prime Minister of India, he was confident that a special push would be given to the Ram Mandir, and that interview we've played out on India Today. But for the moment, I want to take you back to that Karyashala, because at that same Karyashala in Ayodhya is a bell, a giant bell, a temple bell that weighs more than 600 kgs. And this bell has been sent by devotees at Rameshwaram. So this bell is to be placed at the Ram Janmabhoomi temple, and many bells like these are coming for other temples. One for the main Garbhagriha of the temple, main Ram temple, but then there are also temples on the ground floor in phase 1 would be Ramlala's temple. On the first floor, during the second phase, when that is built in the second part of 2024, that will depict the Ram Rajya. That again it promises to be a very beautiful temple. I'll get you more on that, but before that, take a look at this report on that giant temple bell. A 620 kilo titan, resonating with the triumphant notes of Jai Shri Ram. The sacred phrase etched in metal, carrying the weight of devotion. हम तेलंगाना के हैं, हम काशी और अयोध्या यात्रा करने के लिए आए हैं, तो आप दर्शन के लिए जा रहे हैं हम। ये टेम्पल बेल देखा आपने?
टेम्पल। ये घंटा हाँ, घंटा अभी देखे ये कितना 600 6 कुंटल 13 किलो का बताए हम। तमिलनाडु का है। The chimes preparing to find their eternal home in the heart of the Ram Temple in Ayodhya. Occupying the pride of place at the Karashala temple is this massive temple bell. It weighs around 600 kg, 620 by some accounts. It has Jai Shri Ram written on it, and it's come from Rameshwaram. This temple bell will be installed at the Sri Ram Janmabhoomi temple when work at the complex is completed. A majestic testament from Tamil Nadu, transcending time, connecting the past, present and future. Bureau Report, India Today. And every day a new corner of Ayodhya is actually being decked up and spruced up by the administration, by volunteers and also by devotees, by residents, because they want this city to look beautiful when Ram Lala's Pran Pratishtha takes place at the Divya Bhavya Ram Mandir. A quick break, back with lots more. Keep watching our special broadcast from Ayodhya. India, as you know, is a land of diversity where countless stories are born every day. A brand that has celebrated the rich mosaic of our country, India Today, is the brand that has been covering stories from all spheres of life from across the country tirelessly, making sense of the myriad India and the Indians residing in here. The story of India Today and the story of my latest film, Donkey, which is inspired by the phenomenal dreams and struggles of the same Indians and is a story about love and friendship filled with humor and heart. हमने मजबूरी में अपना घर छोड़ा था, वरना कोई